that what is tech? Yeah. So validation of the product, effective marketing strategy. Uh, Initially, I was not confident on that. Uh, about my journey of last, say, more than 35, 40 years, I've gathered certain experiences, and then I was able to gather that the marketing strategy actually revolves around the validation. I'd like to inform, means communicate these things to the students. What is validation? If at all, I'm basically Gujarati person, and I am quite comfortable with English as well as Hindi. Plenty of these students I see over here, say there are more than say 20 or something like that. They seem to be Gujarati, but then if at all my slangs goes and darts towards uh, Gujarati while talking about in Hindi or English by mistake. I mean, say Gujarati or Hindi by mistake. Please raise your hand if you're not comfortable about it, and you can always ask me upon that. Yeah. So validation, એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે. If you permit me to tell, ગુજરાતીમાં કહેવત છે. When there is a procession of marriage procession going on, and there is a bridegroom riding on a horse or any vehicle, uh, who is going to appreciate him? How good looking he is? The only person and the first person who is going to appreciate is the mother of the bridegroom. ગુજરાતીમાં એની કહેવત છે વરને કોણ વખાણશે. The gesture happens to be Varnima, that is the mother of the bridegroom. There is a reason behind it, that it is his creation. It is it is her creation. It is her beloved duty to do it. But then it also appears to me, and it is applicable to the startups. Now, initially, I was able to gather from my journey that all the products that I would manufacture, I would be so much adoring it that anything would never happen to my product. It would be the best of the best in the world. And then if I offer the same thing to the market. Now, when I went to the market, I was able to find that there had several difficulties. Now, that difficulties, if I do not solve it, I am not able to approach the market altogether. Why talk about any revenues then? So it was necessary for me to understand what are the expectations of my customer. That is called validation. Actually, as a startup, if I have to say, startup validation starts from the beginning, and there is an alpha product. Just around yourself, there would be a laptop or a mobile, and you can understand initially mobiles were huge. They were quite huge. You have to hold it across you have to grab it like this. These were the huge mobiles. They weighed about 500 to a kilo. And then this, I think you might not have seen them as well. Each call would be costing about 25 rupees per call. These are the technological uh, things which were very much rudiment, that were very much old, that I'm talking about. But then validation started occurring. Validation occurred with a reason. Will it be able to approach the market? Would it be comfortable to the customer? Would they be able to sell it to the customer? Say 25 rupees per call. It's too much. Mobile equipment would be say about more than say 75,000 rupees. So it was not able to penetrate across the market. Now then later on, it so happened that initially Nokia started coming, and prior to that Nokia, I recall there was Motorola. It started with something like a paging system. Paging. Mobiles actually started with paging system. Paging means just you have to give a call and somebody will understand that I have message for him or her. So that was paging system. Then later on it came up with the mobile. Means that was from Motorola again, and then again from Nokia. You might have seen slim Motorola mobile then, and that was containing a torch and then
then the watch, and then games and such things. But then there was expectations from validation. So I can tell these things. Paging system would be an initial to of mobile system, and it had to be validated. That was mobile system के लिए सबसे पहले आया था paging, and that was initiated by the Motorola, and it was alpha product. I want to use this word, alpha product. Alpha product means the first insertion of a product in the market. This alpha product then it didn't fall well. It had several disadvantages. Because of that, Nokia came up simultaneously. Then Motorola came up, and then there were miniatures, so on and so forth. I do recall again that in the year, say 1999, uh, you might be very young either whatsoever. I had bought one computer that was very slow to the considering this days laptop as well, and it costed about 75,000 rupees. It was the costliest that time, and then it was uh, discarded because it was very slow. The upgradation started. That time, laptop was just uncomfortable thing. What I wanted to put before you is validation of alpha product starts. Alpha product happens to be coming from your end, and discarding that. I want to use this word. You are yourself discarding that product. You're not comfortable. So you are discarding it, and then you're coming up with a beta product. Beta product means that the next version which is superior to the previous one. So first of all, alpha version, which you have to discard, not satisfied. This is called self validation. मेरे खुद के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं क्यों किसी को और दे सकता हूँ, मुझे उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे इतना ज्यादा काम करना है, उसके साथ एक मार्केट के हिसाब से भी मुझे काम करना है. दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, सेल्फ वैलिडेशन. दैट्स एन इनिशियल स्टेज ऑफ validation. This validation helps you to generate profits not only for yourself but also for future investments and development. You have promoted an alpha product and you have generated funds out of it, and you have to invest those funds in further enhancement of the product and then validate it. So there is always a requirement of enhancement of the product, enhancement to the market scopes, that is largeness of the market penetration, whatsoever you call it. So these are the basic requirements of validation, which are always to be done uh, as you promote your product. Now, validation is required not only by the customer as well. I can give you further more examples of validation in engineering industry. If you are happen to go in for an engineering industry, whether it would be mechanical, civil, or computer or whatsoever, very easily I'll be able to talk about validation for mechanical or say civil or whatsoever. You are aware that there is Bureau of Indian Standards in India, and this standard helps you as a startup as well to validate your product. What happens is, I'll give you further example. There was a startup, and that startup was initiating a product that would be useful to the disabled person having blindness. Now he had prepared a product. He had manufactured a product wherein there would be a sensor on in the handheld sensor. If anything comes in between, the person who is moving around, the buzzer will start giving out the sounds, or vibration would start give out. Now that was the concept, and it was unique. But then initially he found that it was unique idea, but would it work? Yeah, he manufactured prototype and he was satisfied. Then he went for the mass production. After mass production, he had invested money. He has invested his time, efforts, everything. But it didn't click the market. You know why? When he went to the market, approaching several association, blind men's association, so on and so forth, they were unsuccessful. They were not comfortable about it. And then the people were very unhappy. भाई ये प्रोडक्ट लेने के बाद में हमें तो परेशानी ज्यादा होती है, ये काम ही नहीं करता है. Then there was a concept of validation.
Validation, what they did was they appointed a third party agency having a national and international reputations. So what they did was these are the acceptance standards. Now listen and understand these things. There are acceptance standards. एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो जैसे मैं खाना खाने बैठता हूँ तो दाल में नमक होना चाहिए, दाल में पानी रीजनेबल होना चाहिए. दीज आर माई एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स. नमक नहीं है या कम है या ज्यादा है, दीज आर माई एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स. जो रसोई बनाने वाले हैं या द कुक, he will show me, this is the recipe I have made and this is the amount of salt I have put in, and are you comfortable? So this was a point of validating dal. This happens every day, everywhere, in every household. This is a sort of validation. And if this is the acceptance standard कि हाँ ये बराबर है, then it is manufactured or it is being served. The same thing is applicable here. Validation one, but validation falls after acceptance standard. Here I wanted to stress those words, acceptance standards. If you are not happy, ज़्यादा नमक हो गया, it is not within your acceptance standards. So you are not comfortable about it. So as soon as you have to frame out acceptance standards soon before you manufacture a product. जैसे कि मैंने अभी दोबारा बताता हूँ कि जो ब्लाइंड मैन के लिए वाइब्रेशन होना चाहिए, जब भी कुछ सेंसर्स के हिसाब से कुछ बीच में आ गया है, तो देयर वुड बी अ वाइब्रेशन. इफ एट ऑल इट इज नॉट हैपनिंग, वाइब्रेशन साउंड नहीं हो रहा है, द प्रोडक्ट इज नॉट वैलिडेटेड. Incidentally, after manufacturing those hundreds of products, more than 50% of the products were not comfortable or not conforming to the acceptance standard that he himself had laid. So he appointed a person to check all those people, acceptance standards first. That is it the correct acceptance standards or not? That includes inside circuits, inside controls of volume, inside controls of every other aspects of it. And then after putting those acceptance standards, he offered for the inspection to a third party, uh, which is having international reputation. May I name it as ABC? Now, they went to the ABC as an institution or a consultant to whom acceptance standards were negotiated, it was implemented, and that within those framework, the ABC company as a consultant shall have to validate that product. Here, after the acceptance standards and then the validation, uh, plenty of rectification, upgradations were happening. And once those happened, uh, more than 100% of their products were saleable. They went to certain large corporates, maybe like ONGC or IPCL or something, and told them that please help me to sell those products. And they were able to sell it as hot cakes. Not only that, after validating this product, because it was been approved by ABC. ABC is having international reputation, and those because of that, the validated product had a large market in the entire country. Now, this is the importance of validation. I hope you can understand that validation helps you not only in your marketing strategy, it also helps in developing new products. This again becomes an alpha product, and then again you have to upgrade those products, and later after upgrading those products, you can also put it for further enhancement of the facilities. कुछ भी उसमें मान लो घड़ी हो तो टाइम भी कह सकता है, इट स्टार्ट स्पीकिंग कि दिस इज द टाइम. वाइब्रेशन हो सकता है, साउंड हो सकता है, व्हाट नॉट. इट कैन रिकॉग्नाइज पीपल कि भाई ये आदमी हो सकता है इफ इट इज गिवन द कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और समथिंग ऑफ दैट. सो दिस बिकम्स another product. So you have to discard previous product often. uh, I do recall certain companies, they kill their previous product. They purposefully see that the product is killed. उसको नेगेटिव मार्केटिंग भी कहते हैं इन द करेक्ट सेंस. बट लेकिन स्टार्टअप के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, आप जितने भी स्टार्टअप्स है, पहले तो प्रोसेस ही है हर एक कंपनी के लिए
अल्फा प्रोडक्ट जाएगा, अल्फा प्रोडक्ट के बाद में एनहेंसमेंट होगा, अल्फा प्रोडक्ट के बाद में एनहेंसमेंट होने के बाद में व्हाट people do is I show my product to my friends, my uh, people who have good feelings about me, and then I ask them, "Would you like to have it?" He will say, "Yes, it is excellent. I'm really thankful कि आपने offer किया, बढ़िया सा product है." Then the second question comes over here, and then you say, okay, "This product is costing say 100 rupees. Can you shell off 50 rupees?" If he denies, he's not correct to you. 50 रुपए जब देने की बात आती है तब हर कोई समझ लेता है कि शायद ये सही होगा कि नहीं, ये गप्पा हाँक रहे, ऑल्दो ही मे बी योर फ्रेंड, ही मे बी योर वेल विशर, हुसोएवर। जैसे ही अब पैसे की बात आएगी वो हाँ ना करना चालू कर देगा। दिस इज अ टेस्ट ऑफ वैलिडेटिंग योर प्रोडक्ट, putting, then you have to again ask what should I do further to put up in my acceptance standard that is expected by you from my product. I hope you understand what I say. uh, there is a friend like X and Y. X is a manufacturer. He says to Y, yeah, product kaisa hai? He kahega, this is fine. He'll say, this 100 rupees per worth, you give me 50% advance. He'll say, no. Here the question comes. अगर एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स में है तो उनका क्या एक्सेप्टेंस, वाई का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्या है? वो एक्स इनबिल्ट करेगा, इनकैलकुलेट करेगा, जिससे एनहेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ enhanced product. The previous product gets discarded again. That is the reason of validating, self validation. I also give an example of third party validation. थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद में काफी कुछ exorbitant changes आएंगे which is acceptable to the market. The market is the mover. Product is not, you are not the mover of the market. Market decides what, to what extent you want to work with the market or not, or whether you want to give you get these yields or not. This is the market will decide. जैसे ही एक बात पता चलेगा कि ये मार्केट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो you will have to continuously strive to see that what are the new things that is required. I can give you another example, like Patanjali coming suddenly and Colgate remaining there. They were able to, yeah, Maggie, yes, Jaideep, you are right, Maggie controversy. So Patanjali was there, I mean Maggie was there. Yeah, I did, you understand, Jaideep, you are right. uh, Already Maggie was there, Patanjali was inserted. They had to enhance the Maggie had to enhance their product marketing strategy, everything they had to uh, uh, right. So Nikhil Gautam, okay, right. So this is how validation occurs. This is how validation occurs, and it is a continuous process. It is never that it is going to stop. I have examples of my own as well. वैलिडेशन एक बार नहीं होता है, बार बार होता है. जैसे कि मैं बताता हूँ आपको ISI के हिसाब से, व्हाट हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ थिंग्स आर अकरिंग. ISI की बात करूं मैं, as per the norms of and legal norms of ISI, Bureau of Indian Standards, ISI mark. Every time you manufacture a product, you have to keep a consistent records thereof. If you are not able to put up those records, there are possibilities that the product may fail and you will be getting yourself over involved. Uh, each time you have to keep the records, and those should have, the product should have a unique serial number. मोबाइल फोन्स में भी सीरियल नंबर रहते हैं, हर एक प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके हर एक में सीरियल नंबर रहते हैं, और उसका रिट्राइवेबल मीन्स यू कैन कलेक्ट दोस डेटा बैक, जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स थे उसके हिसाब से वो रहने चाहिए. एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, वैलिडेशन का बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, एंड हाउ गेट कंपनी मीन स्टार्टअप आल्सो वुड गेट पेरिश बिकॉज ऑफ दैट इफ दे आर नॉट हैविंग द एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड. आई विल गिव यू द एग्जांपल. आई विल नेम अ कंपनी of as an initiative initials only. It is called AK. I name it as AK, situated down in south. They were manufacturing engineering product, and this they had to sell it to IFCO, IFCO Panipat. It was IFCO Panipat, and the third party had to validate that product.
if the product had passed through that, then and that the validating authority is allowed to uh, accept the product and allowed to ship. The AK would be allowed to ship that product to IFCO Panipat. So there was a validating authority. Would I name it as XYZ? Now, after manufacturing of those products by AK, after manufacturing of those products by AK, the product was validated by the consultant. I named it as XYZ, right? I think I named it as XYZ. And after validation of that product, the IFCO Panipat received those materials. Incidentally, uh, there was an accident and it was a fatal accident. The product didn't work as per the standards and acceptance criteria. Because of that, Panipat IFCO called upon XYZ as a consultant that there is a deficiency in your services. There were no retrievable documents from AK. क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस XYZ की हुई, लेकिन एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्या है, दैट वाज द क्वेश्चन. उसके हिसाब से रिट्राइवेबल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, दैट वाज अगेन अ क्वेश्चन. एंड लेटर ऑन इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ that there were no retrievable documents. The acceptance standards were not followed because they didn't exist yet, and the fatal accident had occurred because of the faults of AK. Now here you just understand the entire links or the events that has occurred. First, there should be an acceptance standard कि मुझे ये चीज चाहिएगी, उससे कम होगा तो मुझे चाहिएगा ही नहीं. This is an acceptance standard before validation. अगर ये वैलिडेशन के हिसाब से एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड हुआ, फिर बाद में वैलिडेशन होता है एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से. हु इज वैलिडेटिंग? द वैलिडेटिंग अथॉरिटी हैज पर्सनल स्किल्स. ये वैलिडेट करता हूं, दैट विल बी हैविंग दोज मार्किंग्स एंड ही विल बी आस्किंग फॉर द रिट्राइवेबल डॉक्यूमेंट. रिट्राइवेबल मींस जो चीज वहां पे है वही चीज रहनी चाहिए. XYZ had not procured those retrievable details as well. So they were also involved. Now the fatal accident happened, and because of that, they had to suffer, and AK was shut down. I want to give you these examples to give you an understanding what is validation. Validation also helps you to market a product. मैं अगर स्टार्टअप हूं, मैंने वैलिडेट किया कुछ प्रोडक्ट, इट हैज एन एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, बट इट इज नॉट एज पर द मार्केट, तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू एट ऑल. अगर मार्केट के हिसाब से भी हुआ, फिर बाद में वैलिडेटिंग अथॉरिटी लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडिया में एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड होता है. देयर आर मेनी एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड दिस कंसल्टेंट्स फॉर दैट, एंड वी रेगुलरली ask them कि आप जो भी हमारा प्रोडक्ट, we manufacture industrial valves. Frankly telling you, we are manufacturing industrial valves, and these are being used in very odd services, absolutely corrosive, absolutely erosive, and so forth whatsoever. If a failure happens, we are also very much uncomfortable about it. कंपनी को बहुत कुछ नुकसान हो सकता है. तो we always ask a validating authority to visit our company at cost, acceptance standards को review करें, एस्टेब्लिश करें बराबर है, उसके बाद में वो चेक करें कि वैलिडेटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है. एंड वंस दे आर एक्सेप्टिंग इट, द वैलिडेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्टेड that the product stands to the acceptance standard, as well as it is confirming to the requirement of the customer. What they are giving is consents to dispatch material. Now listen to me properly. They are giving consents to dispatch the materials. They are not saying कि आपका माल बराबर है, आपको पैसे मिल जाएंगे. You know, they give consents to dispatch the materials. Later on, the materials received, they should be received in the acceptance standard of transportation. They are so precise. They are so precise. They are putting it this way. The acceptance standard of the transportation also has to occur properly. वो stores में पहुंचना चाहिए. आपने बनाया सही है, वो बात नहीं है. Transportation में भी सही होना चाहिए. These are the occurrences. So production is a different thing. Quality control is a different thing. Acceptance standard is a different thing. Then again, it is extended towards the delivery of the product. And then again, it is extended to the usage of the product. Now you can understand what is the importance of validation.
each time you're not promoting your product only at one point. There are several things you have to put it into as a tunnel view. जैसे कि टनल में एक चीज से बाहर देख नहीं सकते, उसी तरह the entire product has to be seen in that perspectives. That is the most important thing for the validating authority as well as manufacturers for you. Now validation का मैं दूसरा भी एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ. वैलिडेशन स्टैंड आप फूड में भी देखते होंगे, फसाट करके भी है, उस पर एगमार्क करके भी है. ये इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलिडेटिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटीज है. वो ऑडिट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, वैलिडेट भी करते हैं. ऑडिटिंग इज डिफरेंट. ऑडिटिंग इज फॉर रिकॉर्ड्स दैट वी आर गुड दैट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वैलिडेशन. ऑडिट करते मींस दिस आर द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट दैट दे मैन्युफैक्चर. या दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एक बार एक चीज अच्छी कर दी उसका मतलब नहीं हर एक बार अच्छी होगी. Consistency is also required. Giving an example of consistency, I would like to tell about Coca-Cola. Coca-Cola के लिए आप देखेंगे तो whether you go to Kerala or Kashmir, the taste remains same. क्लोजअप वही होगा या कॉलगेट होगा, उसका टेस्ट परफॉर्मेंस आइडेंटिकल होगा. सो इट इज हैविंग कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स कि भाई ये मेरा बेसिक एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है. टिल नाउ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ओके फाइन, आई एम गोइंग अहेड नाउ. एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड हर एक रीजन कंट्रीज के अलग अलग हो सकते हैं. आप जानते होंगे कि यूएल करके भी, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसी तरह से यूएसए में देयर आर 3-4 ऑफ देम. जैसे कि अपने एगमार्क है इंडिया में, फसाट करके भी और है, उसी तरह से यूएसए में भी है. यूएसए में सीई करके यूएल है. देयर इज यूएल, आई वाज मिस्टेकन, यूएल करके है यूएसए में. उसके अलावा दूसरा भी एनएसएस करके है और व्हाट्सएवर. देन इंग्लैंड के अलग हो जाते हैं. फर्स्ट person to establish those acceptance standards were Lloyd's in Britain. जो सी वर्दी शिप्स का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड उनका रहता था. अगर सी में शिप खराब हो जाए तो what are the consequences? The entire ship is lost, life is lost, whatsoever. So they had made an acceptance standard there. Lloyd's were few of the first people who gave certification for the approval of the seaworthy ships. So these are the ways the third party inspecting authorities, auditing authorities, or the validating authorities keep themselves engaged with the scenario. As a startup, if I have to promote it, you might be facing several difficulties. कि भाई मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन फिर बाद में मार्केट में बिकता नहीं है. नाउ दिस इज मार्केटिंग टॉकिंग अबाउट. जैसे ही इनिशियली मैंने आपको कहा था कि अगर ब्राइड ग्रूम जाता है तो एक्सेप्ट वो उनकी मदर कहती है कि नहीं, ही इज रियली स्मार्ट, ही इज रियली हैंडसम, बट दैट इज नॉट द थिंग. वैलिडेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से कहे देन इट बिकम्स द करेक्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट. ये स्ट्रेटेजी की बात करना हो इसके हिसाब से आगे स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, तो यू हैव टू ऑलवेज फॉर्मुलेट योर एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड फर्स्ट बिफोर गेटिंग इट वैलिडेटेड. जनरली आप स्टार्टअप्स के हिसाब से, now just try to listen me and try to accept it, understand me. एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के बिना आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो the chances of failures are very high. ये एक चीज बनाने के बाद में एक्सेप्टेंस, you have to go from depth and details thereof. Each and every component has an acceptance standards. एक कार बनती है, आप मैं कार का एग्जांपल देना चाहता हूँ. एक कंपोनेंट के हिसाब से व्हाट आर द प्रोसेसेस प्रोसीजर्स ऑफ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स. उसी तरह से कार के बारे में बात करूंगा, फिर बाद में स्टार्टअप के लिए आपका कंपोनेंट को भी इसके बारे में बात करेंगे. कार होती है तो देयर आर सेवरल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिकल्स, देयर आर इंजन, देयर इज carburetor, there is a mechanical system. Any one of them is malfunctioning, the entire car is blamed. I hope you'll agree to that. Now every component has an acceptance standard. Every component has later on been approved as per the acceptance standards, and then later on
the entire car is being manufactured. So every component is important for them. This is how acceptance standards happen to be. That is how validating authority, they would be a self validating authority as well. ये जो कंपनी मान लो मारुति है, तो दे विल से they I've seen new cars okay करके लिखते, means it has been approved, it has been certified, that it has been given proper care to see to it that none failures are being has been occurred. If this has been approved by the validating authority, like say there is TUV or BVQI. These are all validating authorities going for validation only to the acceptance standard. Then this will help you. Uh, मान लो आपने स्टार्टअप के हिसाब से एक प्रोडक्ट बना दिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपने वैलिडेशन रख दिया, और वैलिडेशन इज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हैविंग अ रिकॉग्निशन और रेपुटेशन across the globe, then what would happen? Just try to understand. मैंने एक कुछ भी, चलो मैंने पेन बना दी एक, और या फिर आपने पेन बना दी, और मैंने कह दिया सबसे बढ़िया है, would anybody accept it? No. But if a person who has been using pen, approving those pens, and also has an approach confidence with the entire customers of the world, and he says कि ये पेन बढ़िया है, then what would happen? They will say yes, this person has accepted it. uh, दूसरा एक यूनिक एग्जांपल मुझे अभी याद आता है. I do not allow, if I'm sleeping over here in my bedroom, and if I'm very comfortable there, अमिताभ बच्चन आए, नरेंद्र मोदी आए, if I'm sleeping I won't allow them to come inside. मैं टीवी देख रहा हूँ, I'm having my free time. Now try to understand कि मैं किसी को अंदर आने नहीं देता हूँ, सोने की मेरे वक्त है, फिर भी अमिताभ बच्चन आ जाते हैं. कैसे? मैं टीवी शो देख रहा हूँ, वो आके कहता है एक बार तो गुजरात में आ जाओ. मैंने कहा, सही बात है यार. ही इज वैलिडेटिंग द गुजरात tourism, and I feel very happy to accept it, because he has is it is him who is saying it. Whether I'm trying to sleep, whether I'm having some another work, whatsoever, what is important, but he is a validating authority. He is a validating person who is saying ये गुजरात में आने की जगह है. This is how validation occurs. Is the competency of the person who is validating it, is the popularity of that person who is validating. I'm talking about the startups. Then you go, if you whatsoever product you have, मान लो टेक्सटाइल है, मान लो टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल में अटीरा करके है. You might have heard the name of Atira in Ahmedabad. There are validating authorities in Surat as well. Uh, I am not knowing the name thereof, but there are people, a validating authority for textiles in Surat as well. तो अगर बैठे यस दिस इज अ प्रोडक्ट, ये कपड़ा बढ़िया है, ये एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से, देन इट helps you to market that product. I hope you will agree to that. Now, वैलिडेशन के बारे में और चीज मुझे एक और कहनी थी. जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स का भी एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स रहता है. गिविंग एन एग्जांपल, एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स में प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस. एग्जांपल के हिसाब से कार है, मारुति कार है, और उसमें इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है. अब कनेक्शंस वीक हो गया और इलेक्ट्रिकल सब सही है, तो कार को ब्लेम करेंगे अगर सही चीज नहीं चली, तो इंजन को ब्लेम करेंगे, पूरी पूरी कंपोनेंट मींस एंटायर प्रोडक्ट को ब्लेम करेंगे इफ इवन अ स्मॉल कंपोनेंट इज अ फेलियर. मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ और प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ. प्रोसेस वैलिडेशन इज ऑल्सो कंपोनेंट टू कंपोनेंट वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्ट्रेच टू इट. आपने कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया, मान लो इंजीनियरिंग का हो, चाहे सो कंप्यूटर का हो, स्मॉल प्रोग्राम्स आर देयर, और से मे बी सिविल इंजीनियरिंग का हो, तो उसके हर एक कंपोनेंट का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड रहता है. Acceptance standard is not limited to the entire product, but it is also including the component to component acceptance standard.
उसके अलावा फिटमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस स्टैंड, फिटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद में टोटल कॉम, सो एवरी टाइम यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट। आपने हर एक में देखा होगा, सुना होगा एनीथिंग अबाउट आईएसओ सिस्टम्स। आईएसओ सिस्टम ऑल्सो टॉक्स द सेम थिंग। आईएसओ 9000 करके आपने सुना होगा इसके बारे में, आईएसओ 9000 अप्रूव्ड कंपनी। तो उसमें बेसिकली यही चीज है कि आप हर एक बार, पहली बात कि हर एक बार का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड बनाए। दूसरी बात, वो एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड फॉलो करे और उसका डॉक्यूमेंटेशन रखे। तीसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में यू हैव टू हैव कंटिन्यूअस रिपीटेबिलिटी। Repeatability means all processes should be having continuity for every component that you manufacture. Because of that, the identicalness of the product remains. Consistency of the product remains. Repeatability keeps on happening. That is how you develop a consistent product which is acceptable in the standard. जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में 100% सबसे बढ़िया होना चाहिए। I was talking about a textile manufacturer quite some time back, say maybe 20, 25 years back. वो वक्त अंडर अंडरगारमेंट्स का अंडरगारमेंट्स का प्रोडक्ट बना रहा था, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। ही हैड अ प्रोफिशिएंसी इन दैट टाइप ऑफ क्लॉथ ओनली। उसमें यील्ड कम थे compared to all the synthetic the products, but he had a consistency of marketing, he had a consistency of yields, he had a consistency of rest of his work। उसमें बॉदरेशन नहीं रहता है। ये चीज बनी, हाँ सही बनी, पक्का बनेगी, बनने के बाद में कहाँ जाएगी, यही मार्केट में जाएगी, पैसे मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ही इज हैप्पी। स्टार्टअप में भी अगर आप बात करें, तो आपने प्रोडक्ट बनाया, एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड कंपोनेंट टू कंपोनेंट बनाया, उसके बाद में प्रोडक्ट के हिसाब से अपने कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के बाद में एक्सेप्टेंस लिया और उसको वैलिडेट किया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आफ्टर वैलिडेटिंग यू जस्ट से दिस थिंग्स कि भाई ये मैंने वैलिडेट किया हुआ प्रोडक्ट है, उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, इसके हिसाब से आई एम कंफर्टेबल दैट आई कैन सेल इट टू यू एट अ गिवन प्राइस। यू विल बी एबल टू अचीव दोस प्राइस easier, faster, and to the complete satisfaction of the customer. Customer satisfaction के बाद में what is happening is uh, repeatedness of the customer. कि एक बार ले लिया नहीं, he is going to come again and he is going to be consistent about it. This is what is expected from the market for the startup. Generally startup के पास में दो कमियां रहती, कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्क। एक बार अच्छी तरह चीज बना दी, you are basically students, you had been doing your extremely good work during your exams as well। जब एग्जाम्स के बाद में आप पता चलता है कि हमेशा आप फर्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइम आप सेकंड आए हैं, यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट। द रीजन इज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर, मीन नॉट एक्सेप्टिंग डिफीट नहीं कहना चाहते, but this was deficiency in your concentration, studies whatsoever। that is because of that you have come next to the first। so उसमें दूसरे आदमी ने एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड बार बढ़ा दिया कि मैं इतना तो करूंगा, नो आई विल बी डूइंग समथिंग मोर देन व्हाट प्रीवियस पर्सन हैज डन। वो 80% के हिसाब से काम करता था, उससे आगे मैं 85% के हिसाब से काम करूंगा, 90% के हिसाब से काम करूंगा। दिस ही हैज एनहेंस्ड हिज बार लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसकी stringencies के हिसाब से he is going to perform better, he is going to perform superior than the previous one। that is how he starts scoring। उसकी कंसिस्टेंसी आएगी, he is also comfortable। स्टार्टअप गलती कहाँ कर लेते, गलती ये करते कि उनके पास में कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। यस मुझे चाहिए, बजट से आगे भी जाएंगे शायद। यही चीज होती है कोको कोला के बारे में, थम्स अप के बारे में, पेप्सी के बारे में। गिवन अ चॉइस कि भाई मुझे थम्स अप चाहिए, साथ साथ में मीन्स एवरीथिंग इज लेड टुगेदर, थम्स अप चाहिए, पेप्सी चाहिए या कोको कोला। every individual has a different choice, but then if a person has to go in for say Pepsi, he'll be consistent on Pepsi only। पेप्सी नहीं होगी तो कहेगा कि मैं चला लेता हूँ लेकिन मुझे थम्स अप नहीं चाहिए, आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी। नाउ समराइजिंग इट, नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू समराइज एवरीथिंग। वैलिडेशन में स्टार्टअप के हिसाब से, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार्टअप फर्स्ट।
स्टार्टअप के हिसाब से फर्स्ट इज पुट अप एंड जॉट डाउन, put it on records, put it on piece of paper. What are your acceptance standards of your product? This is most important thing, जो हर कोई नहीं करता है और फिर बाद में कहता है आई एम नॉट एबल टू मीट टू इट. Importance is put it on records. Then thereafter you may enhance as a revision 1, revision 2, revision 3, अपग्रेड करते जाओ, वो बात अलग है, लेकिन आपको 100% एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के लिए बात करें. शायद ये एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड वर्ड आपको तंग करता होगा, लेकिन जब आप फेलियर्स मीट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है. उसके हिसाब से आप वैलिडेट कर सकते हो, इजीली वैलिडेट कर सकते हो. आपका खुद का प्रोडक्ट हमेशा वैलिडेट कर सकते हो. आप खुद वैलिडेट करेंगे, फिर बाद में किसी और को बुलाएंगे कि हाँ मुझे ये चीज का वैलिडेशन चाहिए, दैट विल बी फाइन फॉर यू. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. So then comes validating authority. You are not the only person to validate it. It is the market who's going to validate. Who is the market? A person who has a recognition. लाइक अमिताभ बच्चन, मैंने बताया कि वो घर पे आके कहते कुछ दिन रह जाइए गुजरात में, व्हाट्स एवर. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एग्जांपल. दिस इज अ वैलिडेटिंग अथॉरिटी. या फिर टीयूवी, उसके बारे में मैंने बताया. आईसो, उसके बारे में बताया. मैंने लॉयड्स के बारे में बताया, या यूएल के बारे में बताया. दीज आर ऑल वैलिडेटिंग अथॉरिटीज एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. सो हियर कम्स द वैलिडेशन इश्यू. Any question till now about validation? Any question, you can raise your hands. Should I go ahead then? Okay. Now I'm going to talk about the, uh, just a second. Startup ecosystem. Startup ecosystems. Yes. Now, today, after validating the product, you have to go into the systems. There are several product processes over here. First, you have to form a team. मान लो आपने खुद का एक एंटरप्राइज बनाना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कोर कॉम्पिटेंसीज इकोसिस्टम में. उसके बाद में यू हैव टू कीप ऑन एम्प्लॉइंग पीपल अराउंड यू. देन कम्स द वेंडर्स, योर वेंडर्स who are consistent to you. Am I clear? Hello? Hello? Yes, sir. You are very much audible and clear, sir. Thank you, Darshan bhai. Thank you. So I was going to talk about teaming up. The most essential thing is teaming up. How startup fails. आपकी कोई कोर कॉम्पिटेंसीज होती है, खुद की हर एक की अलग अलग रहती है. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड दैट इज ऑफ डूइंग बिजनेस. हर एक की कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानो. आई वांट टू रिपीट दिस वर्ड. अपनी खुद की कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानो, दूसरे की कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानो, और उसके हिसाब से आगे बढ़ो. यू माइट बी नोइंग अबाउट सारे गम पदनीसा. Everybody have seen that. Do re mi fa sol la ti is in the English version thereof. So any tune missing in Saregama Padanisa will not give the correct songs, the tunes. It won't give same pleasure. So every tune, whether loud, small, shrill, whatsoever, has an importance. Similarly, in startup, you alone cannot do everything. You have to see to it that the startup that it gives you the all the tunes to put up as a music. So it is important that you select your persons, people around you thoroughly well. Generally, employees or generally the partners, you have to be very choosy about it. A whole team should be very choosy about it. Second in the ecosystem happens to be suppliers, who are going to be consistent suppliers. Vendors, whatever you call it, the suppliers of the components. You have to be very choosy. You have to understand how their financial system works, how their acceptance standard works, how they are likely to perform in deliveries.
What's several other things. You have to keep on having an interview thereof. Let the people fail because of these issues as well. Um, मैं जियो की बात करना चाहूंगा ये वक्त पे. जियो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड. ये मुकेश भाई सबसे पहले अनिल भाई के साथ में आए थे. देन दे withdrew, but then again he entered in a large with a large investment. But he was very meticulous about it कि मुझे एम्प्लॉयज के साथ में कैसे बिहेव करना है, किस तरह से उनको रखना है, किस तरह से उनको efficiencies को measure करना है. If they are not consistent, how we want to be getting away from. So I was talking about a concept, employees or the associates or the partners or whatsoever. Then the supplier comes. Now I want to tell about the association, industry association. Uh, there are several associations like Surat में भी associations है, Ahmedabad में भी associations है. Those are trade association who help startups to establish how they are going to function in the market. You take them into confidence, take their help, how creditworthiness of the person is being measured, how credits are to be given, what terms are to be understood. These are most important thing. A startup may fail in absence of it. Uh, मान लो स्टार्टअप ने पैसे लगा के माल बेच दिया और उसका पैसा रियलाइज नहीं होता है. The startup is not going to function. This is most important. Again, वो खुद का पैसा नहीं ले सकता है, उसकी वजह से उसके सप्लायर को पैसा नहीं दे सकता है. The whole cycle system breaks and ultimately it is a downturn of the startup. Which always you have to understand. So you have to go through the association, industry association. ये मैं माल किसी को देता हूँ, ये सप्लायर से लेता हूँ, whether they are correct, consistent or not. कई चीज में ये meticulously फॉलो करना पड़ता है. फिर बाद में स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स होता है. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. I can talk. It's very. It's a very lengthy subject. Legality is a very lengthy subject. लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि you have to take professional help in those legalities. Every time, my company also, when we feel that we have a disagreement amongst our partners or the associates or the stakeholders, then we take a professional help. Helps you thoroughly well. This is what I want to say. Then there are educational institutions to get the technical validity. मैं सूरत की बात भी कर सकता हूँ. देयर आर इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प यू टू वैलिडेट प्रोडक्ट्स. they help you to commercialize product. They tell you how to go through the entire systems. एक और भी बड़ा सा वैलिडेटिंग अथॉरिटी एजुकेशन सिस्टम में है विद अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट इज प्लास्टिक एसोसिएशन, जो इट इज वर्ल्ड रिनोन. टूलिंग एजेंसी भी है उसके साथ में. तो वो चीजें वो वैलिडेट भी करता है. वैलिडेट करने के बाद में वो एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड भी आपको बना के देता है. और एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के बाद में आप प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी भी मेजर कर सकते हैं उसी के बाद में. These validating authorities are sometimes subsidized by the government of India. There are stimulations. मैं एग्जांपल किस तरह से देना चाहूंगा, तो स्टिमुलेटर्स यानी एक हवाई जहाज रहता है और हवाई जहाज में उड़े बिना एक आदमी हवाई जहाज कैसे चलाना वो ग्राउंड लेवल पे सीखता है. दैट इज कॉल्ड अ स्टिमुलेटर. उसी तरह से गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टिमुलेटर्स भी रहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के हैं, वो प्रोग्राम्स पे अपने काम करने के बाद में आउटपुट के हिसाब से पता चलेगा स्टिमुलेशंस के बाद में whether this product is validated or not. One of the product is Indo-German. One of the company or the institution which is funded by government is Indo-German Tool Room. Second is PDPU. PDPU का बहुत बड़ा हाथ है अहमदाबाद में. सूरत में भी है. सूरत में भी है. I'm forgetting the name. But there are institutions, educational institutions that help you technical validation. हर एक चीज excuse me अपने नहीं कर सकते. You have to take a technical help. You have to take a expert help. Legal में भी उसी तरह से experts रहते हैं. This helps you a long way. वो आगे का भी सोचता है
वैलिडेटिंग अथॉरिटी के लिए भी सोचता है, मार्केट का भी सोचता है, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम दैट फील्ड. दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड लाइक टू परस्यू अपॉन. उसके बाद में ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पॉलिसीज, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप्स. दे हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ सेवरल काइंड. मैं बात करूंगा जब हम इनिशियल स्टेज में थे हमारे कंपनी के लिए, तभी बात यूं होती थी कि वी डू नॉट हैव लैंड. सो देयर वाज समथिंग लाइक GIDC. दे हेल्प्ड अस इन लैंड. I didn't have funds. They helped me for funds by GSFC, Gujarat State Financial Corporation. Now, try to understand the factors of production. If you are a commerce student, you are aware that land, labor, and capital are the factors of production. Now, government is giving you subsidized, organized places to work, so industry can work, function properly. So they gave us land, building, then they gave us capital. Then labor was also abundant that time, and there were people means up for upgrading their skills. वो ITI करके था वो वक्त, अभी भी है. So everything would be composed, and then they would give us correct results. This is how those times government worked, but there were several failures in it. So they changed the strategy. Now there is, they trying to catch you young. That this is what they call you are being caught. They catch you young. जैसे कि ये एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज है, वो आगे जो भी करना है वो करेंगे खुद के हिसाब से, लेकिन दे वांट टू टेप those new forthcoming industries, and they want to see to it that it comes from the students itself. So there is something like Student Startup Innovation Program, which is being operated by Government of India, government, state government, so on and so forth. So these changes have occurred since. This also helps students to get the motivation, get the technical help, that get the financial help. मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ फाइनेंस के बारे में, स्टार्टअप की गलतियां कहाँ कहाँ होती है. Financial ratios. Financial ratios are being maintained by, every company has to maintain it. All the bankers, they expect you that you have to maintain those financial ratios, and largely all the enterprises are not comfortable in maintaining those financial disciplines or ratios, and because of that they suffer a lot. What I want to tell you about is you have to be consistent on your financial goals as well. uh, Darshan bhai, we are on time, no? Darshan bhai? No, sir. You may continue, sir. No Huh, issue. I have just a few minutes left. That's what I'm gathering. So I'm just asking about it. Uh, No, no. Yes. okay. So, yes, we are talking about student startup and innovation program. So over here, two things come forth, two, three things. Those should be students, not an entrepreneur. Means a successful entrepreneur. Rather, I want to put forth this should be students, but not an existing successful entrepreneurs. Government is not going to fund them through these agencies, SSIP. These are students, and that they have to tap them right from the beginning, catch them young. That's the concept. So this is most important. After that, government initiation, there is something called IC department, Industries Commissioner Department. There is going to be a competition. Who is the best among the students? Which product is the best? How are you going to work in the business? Is the most important thing. How it comes forth for further enhancement of the and the development of the industry. So there is Industries Commissioner, which are going to evaluate your product. You are going to be evaluated not by Industries Commissioner. The entire team is there. They're going to evaluate your product, yourself as a market skill, yourself as a business skill, as an entrepreneur, and then you are again promoted for the subsidies. Uh, Later on, they may educate you further. आई हब करके है, वहाँ पे आपको एजुकेट करते हैं कैसे आगे फॉर्मुलेट करना है. लेट आई एम जस्ट नाउ गोइंग वेरी फास्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट का भी निधि प्रयास करके है. देन देर इज निधि SSS.
करके है. फिर comes bankers. You have gone through this 9-10 processes आफ्टर प्रोडक्ट वैलिडेशन. ये प्रोडक्ट वैलिडेशन के बाद में आता है. ये 9-10 प्रोसेसेस आ जाते हैं. नाउ फाइनेंस की जरूरत पड़ गई. देयर आर वेज ऑफ गेटिंग finances as well, and bankers are the main sources for that. They are giving you subsidized loans for that. There is collateral guarantee, those are required. Should I give you an example? Means अगर आपके पास में पैसे है तो fine, you are not going to ask for the bank. If you are not having, the government is giving you collateral guarantee. यानी आपके पास में पैसे नहीं है तो आपको गारंटी, बैंकर्स के पैसे चले जाएंगे तो कौन जिम्मेदार लेगा? तो दैट इज कॉल्ड collateral security, which is being taken by government of India or government of Gujarat, or the government of it gives the consent to the bankers. Yes, if the startup fails, the bankers' money are not going to be in difficulties. It will be paid out by the government of India or government of Gujarat or whatsoever. So then later on comes again certifying bodies, validating bodies like Atira in Ahmedabad for textiles, or ARIA, that is for Pune for automobiles. Several things. Surat के लिए भी अलग से important है. Now it comes, so it may come for ये export करना है तो export promotion councils भी है. फिर again you want more capital. You have venture capitalists, first stage, seed stage capital raise करने के लिए, angel. These are large subjects. Actually, these are very large subjects which I fear I will be able to justify within stipulated time. Angel investors है, early stage investors है, series A, B, C, D investors, means that is a crowd funds called, means crowd IPO के लिए, means it is shares and stocks that you are investing in SEBI or this Bombay Stock Exchange or Ahmedabad Stock Exchange or Surat Stock Exchange, bond market. These are funds raising capabilities of the startups as well. Now, if you have any questions regarding whatever I have said, just tell me. Yeah, thank you, sir. Guys, you can unmute yourself also and ask a question to sir directly also. Sir, I have one question in the chat box from Dr. Ashok. Right. Is it for Pan India or specific for state of Gujarat only, collateral free loan? Pan India. Collateral loans, government of Gujarat as well as government of India, but both of them are promoting it. If the startup is not able to have funds and government is sponsoring those products which are accepted in the market, the bankers are supposed to give them funds, and the collateral security will be given to the startup from government of India or government of Gujarat, either of them. Yes, any further questions? Darshan bhai. Yeah, guys, any questions? You can unmute yourself. Yes, anything now further? You can raise your hand as well. Yeah. Yeah. Yes, Darshan bhai. Yeah. Yeah, sir. One is from Prakhar. How to validate an edtech startup? Can you repeat that question, please? How to validate it? EdTech startup, education startup. Oh, Yeah. this is very simple. Yeah, yeah. Prakhar, can you unmute Yes, yourself Darshan bhai. and ask a question directly to sir, so you can better explain to him? Yeah, I'm waiting for the question. Prakhar? Hello, sir. Sir, my question was how to validate an edtech startup. How to validate? How do you spell what edtech starter क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी भी समझा नहीं हूँ. edtech starter क्या कह रहे हैं?
How to Means we will validate? be combining education and technology. So we will be providing education on Okay, using technology okay, platform. okay. Uh, First of all, validating authority UGC करके है, आप जानते होंगे. They have norms. क्या कोर्स कंटेंट होना है. एजुकेशन की बात पहले करते हैं, अपने एजुकेशन की पहले बात करते हैं. एजुकेशन के बारे में यूजीसी है, उसकी गाइडलाइंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है सिंस डिकेड्स. आप जो इंस्टीट्यूशन में है उसको भी यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है. वो एजुकेशन की बात हुई. अब टेक्निकल की बात करूं तो आपका प्रोडक्ट कौन से रिलेटेड है वो मुझे जानना पड़ेगा, उसके बाद में मैं कह पाऊंगा. अच्छी तरह से मैं आपका क्वेश्चन अभी भी समझा नहीं हूँ, फ्रेंकली आई एम नॉट एबल टू. एजुकेशन की बात समझा, वैलिडेटिंग अथॉरिटी यूजीसी है वो मैं जानता हूँ, शायद वो आप भी जानते होंगे. लेकिन बाद में टेक्निकल की बात करें, मैं अच्छी तरह से समझा नहीं हूँ. व्हाट इज योर प्रोडक्ट, बेसिकली व्हाट इज योर प्रोडक्ट? Well, actually, there are a lot of examples right now in India, like Byju's and Vedantu. So our business model is somewhat similar to them. ओके, So I hope सो this will. I'm very clear now. I'm very clear about it. You're talking about Beiju. Uh, there are, okay, fine. It goes this way. आप अगर कपड़ा खरीदने जाते हो बाजार में, तो आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया और आप सिर्फ उसको छुएंगे. इट इज कॉल्ड हैंडी मीटर. वी कॉल इट हैंडी मीटर. हाथ से छुआ, अच्छा लगा, खत्म हो गया. दिस इज योर एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड. अब देर आर नो एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स फॉर बेजूस. क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में. देर देर इट इज बीन सेल्फ लेड. वन, it has been elevated time and again after their experiences, and that has to be done with consultation of the consultants. वो कंसल्टेंट्स भी रहते हैं, वो हमेशा उसको हेल्प भी करते हैं. उसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, कोर्स कंटेंट भी आ जाता है, यूजीसी भी आ जाता है. मींस दिस आर ऑल वैलिडेटिंग अथॉरिटीज. और फिर बाद में फाइनली मार्केट में एग्जिस्टेंस में आते आते वो अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन, इस तरह से अपग्रेडेशन हुआ है. बेजू इज नॉट अ सिंगल डे वर्क. इट इज कंसिस्टेंटली kept on enhancing their product, their method of working. That is the way they have come into the market, and they are almost like a leader these days. I understand, but then validating authority cannot be like a third party. Means Bureau of Indian Standard के फसाड या एक मार्क ऐसा जरूरी नहीं है. It can be self validated as well. एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड खुद का भी हो सकता है. Whereas when you're going to talk about Beju, उसमें तो कंप्यूटर का भी, सॉफ्टवेयर का भी रिलेटेड आ गया, हार्डवेयर का भी रिलेटेड आ गया, यूजीसी का मींस एजुकेशन रिलेटेड भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है. He has to consistently keep on validating according to them and market need. I hope my answer gets due acceptance. Yes, sir. Thank you, sir. Right. Yes, yes, sir. Sir, one question is related to product validation. How to validate a hybrid solar inverter product? See, it goes with the product to product. Now you're talking about hybrid solar. Inverter. You said inverter. Yeah. This is highly technical thing. जैसे कि उसके लिए there are companies. You can note the names thereof. One is BVQI. It is a French company, French Consulting Authority, and it is called BVQI. They have offices in Surat as well. They have offices in Mumbai as well as Ahmedabad as well. There is second company called TUV. These are all known names. You have to promote your acceptance standard. You have to tell them to visit you. You have to negotiate your acceptance and everything you have to negotiate, and then they get the things validated. अब दूसरा उसके बाद में ये कहना चाहूंगा एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड के बारे में. बहुत सारी किताबें हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन. इफ यू विजिट द लाइब्रेरी ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कोई भी इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी होगी, इससे बढ़िया सा लाइब्रेरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की दिल्ली में है. उनके यहाँ तो जेकोस्लोविकन स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स. अमेरिकन स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ऑल लेटेस्ट. दे हैव टू कॉम्प्लीमेंट्री उनको शेयर करने पड़ते हैं.
मैं ये कहना चाहता हूँ वो एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड सोलर के लिए क्या है मैं नहीं जानता हूँ फ्रेंकली, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी में, उनकी खुद की इंडेक्स होता है उसमें से वो acceptance standard. You have to share it. If at all it is not there, you have to put it on your records, and then later on, after validating them, you have to go to these two institutions I said, TUV, BBQI. There SBS करके भी है, then SMS करके भी. There are several validating authorities. वो accept करेंगे, उसके बाद में आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. और इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर इज अगेन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट. इन्वर्टर का तो 100% ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में खुद का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड. वो होगा ही होगा. यू हैव टू फेच दैट, यू हैव टू फॉलो दैम. देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आल्सो फॉर इन्वर्टर्स, तो वो फॉलो करेंगे. तो बाद में तो सब सोलर एनर्जी एज सच is a natural energy. You cannot enhance it. You cannot uh, take more out of it or give something more. It is a natural thing. It will keep on happening. But for the inverters, yes, you can go through these books. You can go through the acceptance standard. You can formulate acceptance standard. Go to TUE, BVQI, SMPS. What there's plenty of them. Plenty. आप कंसल्टेंट करके एक गूगल कर सकते हैं. You just consultant for inverters. ऐसा भी कर सकते हैं. You will find several of them. Yes, I hope I have satisfied this question to the best of my understanding. Thank you, sir. Sir, one another question is for the from the same person. Is there any consultant or agency available to support for launching their product in the market? Who can support them? मैंने जन्म लिया है, मैंने खुद ही लिया है, मेरी माँ है, दैट्स ऑल. स्टार्टअप को इसी तरह से हेल्प मिले, दैट्स नॉट दैट इज गोइंग टू बी टू फार एक्सेप्टेड, मींस एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कुछ हो गया है. खुद का आपको करना पड़ेगा. कोई हेल्प करे तो प्रोफेशनली करेगा. प्रोफेशनली करने के बाद में अगर सक्सेस हुआ, यू आर हैप्पी, आपका पेट सामने या अच्छा किया. लेकिन फेलियर हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस. जियो लॉन्च होने के बाद में उसमें सब प्रोफेशनल हेल्प होते हैं, लेकिन जो अगर फंडिंग करने के बाद में फेलियर्स होता है तो मुकेश भाई को ही देखना पड़ता है. उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है. प्रोफेशनल हेल्प करेगा, लेकिन लॉन्चिंग के लिए उसके बाद में नतीजा जो भी है वो दैट यू टेक केयर. लॉन्चिंग के लिए देयर आर प्रोफेशनल्स एज वेल फॉर दैट. यस. Thank you very much, sir. Guys, is there anyone have a question? Yeah, I think there are no more questions. So thank you very much, sir, for taking this session and giving knowledge about product validation, marketing strategy, and startup ecosystem in very simple words with some real life examples. Thank you all the participants for joining this session. Thank you very much, sir, once again for accepting our invitation. It was a lovely session with the students. I'm very much happy with them. मुझे जो कुछ शेयर करना होता है, I'm very glad to share them with names and everything. जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, it was a wonderful